Hello friends, hope you are doing well. Welcome back to Business Analyst, the story team. In our last video, as a part of requirement engineering process, we explored the type of requirements such as business, user, and software development requirement. We also broke the 3 levels of requirements such as review initiative, projects, and operational enhancement. And finally, we have discussed about how to start the requirement process by defining the business problem, needs, goals, and objectives. So please don't forget to subscribe and share your feedback for improvement. And if you have missed that video, I would recommend please watch this for the foundation. So today we are going to take a step further. Instead of just theory, we will dive into real life case study, and that will show you how to identify the right requirement in the action. So आज हम लोग बात करेंगे एक केस स्टडी के साथ कि जो भी हमने फाउंडेशन पढ़ा था उसका हम लोग कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. And that case study I have picked today is a new business initiative, so that we're building a new software requirement from the scratch. So इससे क्या होगा कि we'll cover each and every steps involved into the technical business analysis. So business analysis का जो भी stages हैं वो हम लोग कवर करेंगे क्योंकि ये new stages से शुरू होगा. And the task performed by technical business analyst for the new business initiative that which हमने already cover किया था पिछले एपिसोड में, वो हम लोग फिर से आज देखेंगे. कि first of all defining your business problem, then business needs, goals and objectives, followed by business context, then business goals, business constraints, and then based on that we try to create a business case document. और टेक्निक जो हम लोग यूज़ करेंगे इसके लिए जो टास्क परफॉर्म करने के लिए वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 वाइज एंड फिजिबिलिटी स्टडी. So this will not only understand the concept, also you will see how the work in the practice. So ये आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने में मौका मिलेगा. So stay tuned and let's dive in. तो चलिए शुरू करते हैं. तो मैंने जो आज केस स्टडी पिकअप किया है इट इज़ अबाउट लाइक डेवलपिंग ए न्यू CRM सॉफ्टवेयर. ये मेरे साथ रियल टाइम में हुआ था एक बार कि व्हेन आई जॉइन्ड माय फर्स्ट कंपनी, इट वाज इन स्टार्टअप एंड हार्डली 10 पीपल वर्किंग देयर. एंड जो भी कस्टमर्स था उनकी इंफॉर्मेशन या उनकी ट्रैकिंग थी वो हम लोग मैनुअली मैनेज करते थे स्प्रेडशीट पे, फ़ोन कॉल्स पे, ईमेल्स पे. And it was very difficult and time consuming to follow with the customers, जो कि हम लोग अक्सर मिस किया करते थे. जो भी या पोटेंशियल लीड्स थे उसको मिस आउट हो जाता था. मीटिंग विद द कस्टमर्स, फॉलो अप्स वो ट्रैक नहीं हो पाते थे. और इससे होता ये था कि हम लोग का जो भी पोटेंशियल कस्टमर थे उसको हम लोग लूज़ करते थे एंड एंगेजमेंट भी हमारा सही नहीं रहता था कस्टमर से. इवन कस्टमर कंप्लेंट्स अबाउट दैट. So it was becoming a very difficult task to manage the customer. और ऐसा भी होता था लाइक जो भी कस्टमर इन्फॉर्मेशंस होते थे लाइक KYC डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट डिटेल्स, वो भी सिक्योरली स्टोर नहीं होता था. in which we are exposing the organization to the compliance risk. वो भी एक बहुत important ड्रॉबैक थी कंपनी की, जहाँ पे हम लोग मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ओपनली वो स्टोर होते थे. बेसिकली स्प्रेडशीट्स आर लाइक ओपन ओनली शेयर डॉक्यूमेंट्स है तो कहीं भी हो जाता. Then after the discussion with the higher management, हम लोगों ने डिसाइड किया कि we'll build a CRM सॉफ्टवेयर जो कि not on a high level because मार्केट में अवेलेबल्स थे बहुत सारे CRM सॉफ्टवेयर, पर उनका मंथली सब्सक्रिप्शन या ईयरली सब्सक्रिप्शन जो भी बोलो बहुत कॉस्टली था. So we decided कि we will build our own जो भी CRM कह सकते हो आप, so that हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बिल्ड करें. तो ये एक तरह से केस स्टडी है और हम इसी को लेकर चलेंगे आगे कि ये सेम CRM सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करके हम लोग प्रोसेस करेंगे. तो हमारा आज पहला काम रहेगा कि डिफाइनिंग द बिजनेस प्रॉब्लम्स. तो जैसा मैंने ऑलरेडी स्टोरी में बता दिया है कि बिजनेस प्रॉब्लम्स क्या था. सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट ऑन फर्स्ट टेक्निक लाइक 5 वाइज. सो 5 वाइज इज टॉक अबाउट लाइक जस्ट आस्किंग W's question 5 times. So you can see here my screen right now. I'm just zooming it a little bit so that it will be visual to everyone. So this is one 5 whys, and last is we are using the H.
H is basically how we are going to proceed. So first is like what is always talks about your defining the business problem. So what is the business problem right now? So we'll start writing one. So first is like your manual tracking. So it was like manual tracking, that was a one thing. Then what was the second issue? Like maintaining on email chain. Then what was the third? Like missing the leads or missing the reminders, you can say. That is a one thing. And then what was the next issue with that? Like we're unable to follow up the leads, or you can say missing out the leads, again same thing. Then what was the issue? Poor customer follow up. And the last, it was like maintaining your KYC information, KYC document, it was open. So all these are the problems right now. Okay, just a minute. Okay, so now we have defined the problem. So what is the problem? Let's say, so first thing was like manual tracking of all the leads, then following over the emails, then missing the reminders, missing out the leads, like your potential leads, poor customer satisfaction, you can say, or the poor customer follow-ups, or then lastly your KYC documents was open in the sense it was stored everywhere. So this is your first one. Okay, so we'll say about what. Now the second is like why, and why is always talks about, like since we are talking about the building a solution, so why we need this solution. Okay, so in that case, let's say why this is required. Because the first thing is that your business is losing the potential customer. So let's say we are losing the potential customer, that is a one thing. So why this software is needed, like why we want to build a solution. So in that case it will give you the clear picture why this is needed. Similarly, then one is your lack of compliance, because we are maintaining all the KYC documents, so this is your compliance. Then third one is like growth, because once we have this, we'll start tracking the customers on the time. So business growth is again why that was. Similarly, you can think of anything which is required, like why this we need solution. Similarly, we are doing the delayed follow-ups, so we can show that we will remove this. So this is the one on delayed follow-ups. So like this is our centralized document CRM system, so that we can track all the customers at one point of time. So this is your on why part. Okay, so dosto, now we will talk about who. So who is basically your customer. It talks about key, if you are building the solution, then who is going to use this software. Okay, so first thing is that who all are the customer. So one is your, first of all, the sales guy, that is important, who is following all the leads, that is one. Then HR, who is going to maintain the KYC documents. Similarly, finance team, who is going to manage all the payment details. So all these are our potential customers. Then maybe if you have say customer representative or customer support teams, that is again who required this software. So all these are like customers. Similarly, that might be like if you want to integrate with your that CRM with the external vendors, like say email provider or say email service provider, that is one thing, could be that. Then your payment gateway provider, again this might be another vendors for us. And finally, who is also the customer is also who is the government body, who is going to regulate the KYC things, right? Because thing is that government body is also responsible here
because they are the one who is going to enforce all the KYC mandate, like keep and store all the documents. So basically this is about who. Okay, so you can also highlight it. I'll just write a government body, because they will have their own regulation, like compliance regulation, how we'll store data protection, everything. So that is, so here we talk about the who. So who is the sales, HR, finance, customer. So who, all these are the individuals or say stakeholders basically for the building the software, because each team will have their own requirement as well. Sales will say I need something else, HR will say I need this, finance will say I need this, customer support will team say I need this, or similarly the third party vendors, email providers or the payment gateway will say I need this sort of API or this sort of service. So that everything we will discuss once we go further detailing on finding the individual, like say user requirement, that is on a second stage. So first, right now we are just trying to identify the first two things, okay, like your business requirement. So we already discussed about what, why, who, and now when. When is basically like talking about when this project will launch. So maybe the business team, or say they will set some time, let's say 1 year, that let's say 1 year from the project development. So that is one timeline we can discuss about that. Always talks about when ki project ki requirements kab hai. You need a immediately or you need some timeline. So just here we are setting up the timeline. Okay. So in this case, let's say example, we are targeting 1 year from the development, and where is basically it talks about the system which is used. In this case, since this is the internal software, because this is internal, so this will not matter here. But suppose let's say kind of a global software or kind of a thing which is like it will be used across different country or different state. So in that case, where it is needed or where it will be used. Okay. So in our scenario, this is something internal. Let's say I'm talking about the India sort of thing. So this is where we will use internally. So now we have already talked about the four things. Let's say what is the issue, why we need this software, who is going to use it, when this is required, and where it is used. Now thing is that how part is, again, this is something where we need to do the analysis. Basically it talks about the solution. See, all 5 things we discussed, right? So how we are going to implement this solution. We need a software solution. So let's say this is a one thing. Okay, then उसके बाद डिपेंड करता है वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कैसा होगा. मे बी क्लाउड बेस्ड, ऑन प्रेम सर्विस. सो लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक इट क्लाउड बेस्ड. सो क्लाउड बेस्ड में क्या होगा, it will be used across different let's say different device, right? Because you can access from mobile, tablet, laptop, कहीं से नहीं होगा. So individual source में नहीं होगा, right? Then it will maybe talk about the training also, because since we developed this, so we might need to do the training also to the employee to how to use this software. So this is one thing. Then your different फेज में हम लोग कर सकते हैं, like phase 1, phase 2, phase 3. वो भी like से the release phase you can say, कैसे हम लोग उसको डिसाइड कर सकते हो कि कैसे करना है, कौन कितने. like से phase 1 में हम लोग ये let's say CRM का कस्टमर ट्रैकिंग देंगे, phase 2 में HR रिलेटेड देंगे, phase 3 में फाइनेंस जहाँ पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे. So it will be like a incremental kind of a software which will be provided to the company. Now so all these are basically talking about the how. So how piece is like you don't need to do the immediately. I'm just giving the highlight, because once you have all those 5 different questions, uske baad you will sit with the different business holders once again, and then we'll see how this is implemented. You will propose some sort of a solution to the team, like this is how we are thinking of, and then it will get approval, and after that solution building will start. So this is again, it is your how part. Okay. So hope you clear everything here now. So let's recap once again before I'll move to the another like say feasibility study. So and after that we will create all the requirements. So let's say first thing, it talking about the what is basically what is the problem, why, like why the software is needed,
who is talking about who is the potential customer or potential user for this software. When is basically talking about the timeline. Okay, so every project will have their timeline. So let's say 1 month, 1 plus 6 months, 2 months. So जो भी timeline है, plus you can set up a buffer time. And where basically we are talking about the user base. So user base is like it will be used where whatever the software we are building, it will be used only where. How is basically talking about the solution. So कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे बनाना है, how this will be implementation. So basically it talks about your implementation approach. This is all about your 5 whys technique. So let's see our second techniques is your feasibility study. So feasibility study is basically it having the kind of like doing the study or say analysis. So whatever the proposed solution we have, that will be feasible or not. So that is what it talks about the feasibility study. So first thing is your technical feasibility. So first is your technical feasibility. Okay, so technical feasibility is it's talking about the technological resources, basically your hardware, software, technical supports, which is the at organization level. So since this is software which is building for the individual organization, so it talks about the internal organization के पास में. तो उनके पास like वो hardware, software systems हैं, technical supports हैं, let's say developers हैं कि नहीं to build the system. So it is talking about the technical feasibility. तो कभी भी आप जब start करोगे, so we'll see कि organization में वो capabilities हैं कि नहीं building के लिए. So it's always talk about the technical feasibility like that. Then similarly the second one is your economical. Okay, so it talks about your economical feasibility. तो जब भी हम project शुरू करेंगे तो अभी हम देखेंगे कि कंपनी के पास बजट है या नहीं उसके लिए. So that is your economical feasibility. So इस केस में like say company has already approved, so फिर economically तो वो हो सकता है down the line हम लोग जाके देखेंगे कि कितने बजट्स आए नहीं आए. तो I'm just giving you the definition here. Okay, then we are talking about the legal. So legal feasibility, जो states law है या फिर countries के जो law हैं, data protection basically privacy को लेके वो सब है. तो legal feasibility वो talks करते हैं कि क्या उनके legal compliance rules हैं और उस rules के हिसाब से हमें सॉफ्टवेयर बनाना है. तो कभी भी जब let's say payment gateway है, right, सो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए क्या क्या डेटा सेफ्टी होनी चाहिए वो सारा आपको करना है. सिमिलरली KYC डॉक्यूमेंट जो आप लोग कस्टमर इन्फॉर्मेशन मेंटेन करोगे, जो भी हो फ़ोन नंबर्स, एड्रेस, नेम या और भी जो भी सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट होंगे, तो उसको कैसे स्टोर करना है ताकि कहीं भी एक्सपोज ना हो या फिर आप कह सकते हैं वो डेटा बाहर ना जाए. तो दिस इज़ अबाउट लीगल. एंड देन फाइनली operational. Okay, so in this case operational feasibility है कि it talking about your कि जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो सपोर्ट टीम या प्रोसेस में एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है. समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट बनाएं और जो इंटरनल जो पीपल यूज़ करने वाले हैं वो लोग के लिए फिजिबल नहीं है या वो लोग उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है, या तो सॉफ्टवेयर हमने जो बनाई है वो एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है पर वो अनेबल टू एक्सेस द सॉफ्टवेयर. तो हो सकता है उनको ट्रेनिंग चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो उसको इम्प्रूव करना है. सो ऑल दिस टॉक्स अबाउट योर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी कि कितना ऑपरेशनली फिजिबल है वो सॉफ्टवेयर, ताकि जो इंटरनल टीम है, चाहे वो कस्टमर सपोर्ट टीम हो या सेल्स टीम हो या HR टीम हो, उसको कैसे यूज़ करती है, यूज़ करने में कितना उपकरण. एंड लास्टली यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द टाइमलाइन. ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, क्योंकि आपको टाइमलाइन मीट करना है. तो हमें वो भी देखना है कि फोकस टाइमलाइन जो भी डिलीवरेबल डिसाइड हुए हैं, रिसोर्स मिला है. सो दिस इज़ अबाउट योर फिजिबिलिटी स्टडी. सो फिजिबिलिटी स्टडी का हमारा बेसिकली योर 5 things है. First is your technical feasibility, which is talking about your technical resource available to the company. Economically, basically budget.
लीगल इज टॉकिंग अबाउट मेनली लीगल जो रूल्स कंप्लायंस है कंपनी का वो, एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी इज लाइक द इंटरनल टीम्स बेसिकली हु आर गोइंग टू यूज दैट सॉफ्टवेयर इज कैपेबल ऑफ यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर, एंड द फाइनली इज टाइमलाइन. टाइमलाइन इज नथिंग बट योर प्रोजेक्ट टाइमलाइन वेयर बाय द टाइम जो भी हमने प्रॉमिस किया है we will able to deliver or not, so that is your timeline. So all these are basically your feasibility studies and 5 techniques. So these are the 2 techniques now we have already learned, and same thing we will going to use now because अभी हमारा task complete नहीं हुआ. Now see the first thing is that initially requirement के time पे हमने 5 tasks decide किए थे. Now we have done all the analysis here, so now we have to complete the task basically क्या क्या करना है हमें. फर्स्ट टास्क इज योर डिफाइनिंग द बिजनेस प्रॉब्लम. बिजनेस प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने डिफाइन कर लिया है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, राइट. सो फर्स्ट थिंग इज ऑफ टास्क वी टॉक अबाउट. सो वी टॉकिंग अबाउट द बिजनेस प्रॉब्लम. बिजनेस प्रॉब्लम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि क्या हो रही है, लाइक स्टार्टअप कंपनी अनएबल टू मैनेज द कस्टमर बिकॉज ऑफ दे डोंट हैव द CRM सॉफ्टवेयर. सो ये हमारा बिजनेस प्रॉब्लम्स है. वी हैव डिफाइंड द बिजनेस नीड, ठीक है, need or you can say goals or objectives, that is what we need to do. Then we will, what is the business context, this is a very important thing. Then what are the business rules, like हम लोग करेंगे. And then finally constant is basically it is a limitation to the क्या हो सकते हैं, like your technical limitation हो सकते हैं, फिर बजट का लिमिटेशन हो सकता है, तो ये सारे चीज़. So now in the next step we are going to define all this, and then we will create a business case document. Is basically your ये सारे analysis का summary यहाँ पे आपको मिलेगी, and then this will be get presented to the senior management. Just it will talk everything like your problem, needs, contacts, rules, सब तक यहाँ पर आएगा. उसके बाद वो approvals मिलेंगे. Then further we will go to the user for the user requirement. सो आज हम लोग फर्स्ट स्टेप्स क्लियर कर लेंगे कि बिजनेस केस डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, एंड देन हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन ऑल द बिजनेस नीड्स एंड रूल्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, बिजनेस रूल्स एंड बिजनेस कंस्ट्रेंट. नाउ आई विल सी वन बाय वन. ओके, सो लेट मी जूम इट लिटिल बिट. सो फर्स्ट इज योर like say on the part of business case document we already have discussed, like the first thing is to defining the business problem. So same thing, I have just written it here already for the time saving. Learning through the story, going through that you can see. So what are the business problems were there? So it was like the first thing was that following up with the customer was often missed out because there was no proper things, meeting and servicing difficult to track. Company struggles manage to nurture the potential leads. There is a lack of knowing the customer competitor and the KYC document. So these are the 5 business problems we see in the high level. Then what is the business need here? So business need is like that since it is a startup company, it requires an automated, secure and centralized CRM system वो चाहिए. Then effectively manage to customer relationship वो चाहिए. Then process streamline करने के लिए and ensuring the data compliance, so ये चाहिए. So this is basically your business need. Okay, then what is the goals and objective for this one? So first thing is that like this customer data management system हमें चाहिए, that is one thing, that is a goal, like creating a single source of customer details. Then दूसरा goals क्या है? Sales and trackings we need to do, lead tracking के लिए. Then reducing the manual workflow by automating the meeting reminders, service customers and all those things. Then there was another thing was that regulatory compliance. So regulatory compliance was related with your KYC documents. यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स जो भी KYC इन्फॉर्मेशन है उसको सेव करने का. Then finally what is the main objective here? So all those 4 were the objective here. You can see here this is your objective. So objective is your improving the customer satisfaction, retention, operational efficiency to scale the business. Because once you have the CRM, you will able to manage the customer data. आप manage कर सकते हो, उसकी tracking कर सकते हो, जो follow-ups है वो मिस नहीं होगा, automated reminder set कर सकते हैं, तो सारा कुछ कर सकते हैं. So this is your objective. So you can business growth.
अल्टीमेटली बिकॉज कोई भी बिजनेस चल रहा है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है बिजनेस ग्रोथ का ही. सो हियर ऑब्जेक्टिव इज आवर बिजनेस ग्रोथ. नाउ विल लेट्स सी द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट. सो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट इज बेसिकली ये टॉक्स अबाउट कि वो किस इन्वायरमेंट में ऑपरेट होगा, उसके क्या कंट्रोल्स हैं, दोज आर द लाइक बेसिकली आपका बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है. सो एंड इट आल्सो टॉक्स अबाउट कि कौन कौन सा प्लेयर है बेसिकली जहाँ पे ये काम होगा. सो फर्स्ट थिंग इज योर, यू कैन सी द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट आइडियली डिफाइंस ऑन 3 थिंग. वन इज योर प्राइमरी. प्राइमरी क्या हो सकता है, जो बिजनेस यूज़र है बेसिकली, उसमें क्या है, एम्प्लॉय है, सेल्स टीम है, HR फिनांस है, राइट. सेकेंडरी हमारा क्या है, जो वेंडर्स हो सकते हैं, जैसे आपका ईमेल, SMS, सर्विस प्रोवाइडर, पेमेंट गेटवे, इन सबको इंटीग्रेट करना है तो विल यूज़ द थर्ड पार्टी सर्विस जो कि वेंडर्स है. लास्टली द टर्शियरी है बेसिकली जो गवर्नमेंट एंटिटी होगा, जो KYC कंप्लायंस या डेटा प्रोटेक्शन रूल्स को इन्फोर्स करेगी कि कैसे आपको सेव करना है डेटा. सो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, ये सेम यूजिंग द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट विल क्रिएट अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट सिस्टम डायग्राम. सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल यूज द सेम थिंग टू क्रिएट अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट सिस्टम डायग्राम. उससे फिर आपका आगे का प्रोसेस फॉलो होता है. ओके, देन बिजनेस रूल. बिजनेस रूल इज कि आपको क्या करना है, व्हाट यू मस्ट डू. दिस इज द मेन क्राइटेरिया बिजनेस रूल्स का. सो इट डिफाइंस कि क्या रूल्स होंगे बिजनेस ऑपरेट करने के लिए. सो दिसमें है आपका लिखी, फर्स्ट थिंग इज दैट कि एक कस्टमर का यूनिक ID होना चाहिए, दैट इज ट्रू. कस्टमर्स का ईमेल, फोन एड्रेस मैंडेटरी होना चाहिए KYC के लिए, वो भी सही है. KYC डॉक्यूमेंट मस्ट बी वेरीफाइड एंड अप्रूव बिफोर द सर्विस आर एक्टिवेटेड. तो जो है फ़ोन नंबर्स है, ईमेल्स हैं, उसको वेरिफिकेशन होना है, तभी हम उसको सर्विस या जो भी सर्विस है उसको एक्टिवेट करेंगे. देन पेमेंट डिटेल्स आर स्टोर सेफ, जो कि कंप्लायंस रिलेटेड है तो उसको हम लोग करेंगे. एंड सिस्टम मस्ट मेंटेन एन ऑडिट लॉग, ताकि कल को जो भी कुछ होगा, जो भी कस्टमर इंटरेक्शन हुए हैं, वो ऑडिट लॉग आप मेंटेन कर सकोगे. ओके, तो ये आपका बिजनेस रूल्स है. सो इसी रूल्स के हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर डिफाइन होगा. देन बिजनेस कॉन्स्टेंट्स इज लाइक व्हाट यू कैन नॉट डू. सो ये आपका एक तरह से लिमिटेशन सेट करती है आपको कि कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसका क्या लिमिटेशन है. तो वन इज योर लाइक से, तो फर्स्ट थिंग इज बजट का लिमिटेशन हो सकता है. ये स्टार्टअप कंपनी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, तो हो सकता है उनके पास बजट होगा तो हमें कॉस्ट इफेक्टिवली बनाना पड़ेगा. देन टाइम का कांस्टेंट हो सकता है, जहाँ पे एक टाइमलाइन सेट किया होगा बिजनेस की तरफ से, लेकिन जैसे इस केस में हमने 1 ईयर में हमारा सपोर्ट या जो भी स्केलिंग्स है वो हमें रेडी होना चाहिए. देन टेक्नोलॉजिकल कांस्टेंट, अगेन ये स्टार्टअप्स है तो हो सकता है उनके पास वो टेक्नोलॉजी हो, लोग हों उसको इंटीग्रेट करने के लिए, जैसे ईमेल, एक्सेल, पेमेंट्स और मिनिमम डिस्टर्बेंस के लिए. ये सारा चीज़ें आपका टेक्नोलॉजी कांस्टेंट में होते हैं, लोग हैं कि नहीं वो भी है. देन आपका कंप्लायंस रिलेटेड हो सकता है कांस्टेंट, जो कि हमारा है. एंड रिसोर्स रिलेटेड, रिसोर्स इज बेसिकली आपका इन हाउस जो भी IT सपोर्ट टीम है वो आपका डेवलपमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वेंडर्स का सपोर्ट, इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग, वो सब. तो आपका ये बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस कॉन्स्टेंट है. ओके, तो ये जब ये बिजनेस सब ये बन जाएगा आपका, इसमें कुछ चीज़ें और है जो हम लोग यूज़ करते हैं बिजनेस केस डॉक्यूमेंट में, जहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर वो सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग के लिए बन रहा है या बिजनेस के लिए बन रहा है तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेशन कैसे हो सकता है, कस्टमर और हमारा कौन कौन हो सकता है, वो सारा चीज़ें डिफाइन किया जा सकता है. ओके, तो उसका एक अलग सा आपका वो क्या कहते हैं, आपका टेम्पलेट मिल जाता है. तो आपको बिजनेस केस डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं भी आप देखोगे तो उसमें डिपेंडिंग एज आई सेड कि डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट आपका वो केस डॉक्यूमेंट चेंजेस होंगे. एक कोई भी स्टैंडर्ड आपका वैसा टेम्पलेट नहीं होता जो हर प्रोजेक्ट में आपको हर समय ये यूज़ होगा. आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा. और ये जब एक बार बिजनेस केस डॉक्यूमेंट बन गया तो ये बेसिकली आपका एक तरह से वो हो गया. अब ये दिस विल बी यू विल सेंड टू आपके स्टेक होल्डर्स के लिए, वहाँ से ये सारे जो चीज़ें आपने हाईलाइट की हैं उनको देखेंगे और फिर ये साइन ऑफ होगा. साइन ऑफ होने के बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, जहाँ पे कि आपका नाउ वी एवरीथिंग इज डिफाइंड कि बिजनेस का क्या प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव, कंस्ट्रेंट, रूल्स सब कुछ डिफाइंड हो गया है. तो अभी आप उसको यूज़र रिक्वायरमेंट्स में बनोगे. जैसे आप
एम्प्लॉय यूजर रिक्वायरमेंट यहाँ पे अगेन आएगा कि जब CRM बनेगा तो एम्प्लॉय का क्या क्या फीचर फंक्शन होना चाहिए, सेल्स टीम के लिए क्या फीचर्स फंक्शन होना चाहिए, HR के लिए क्या फीचर होना चाहिए, सेल्स फाइनेंस के लिए क्या होगा, तो वो हम लोग आने वाले सेशन में वो हम लोग पढ़ेंगे। सो आने वाले टॉपिक हमारा जो रहेंगे वो आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर्स रहेगा, देन यूजर रिक्वायरमेंट को कैसे क्लियर करना है, देन विल यूज द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, फाइंड आउट द स्टेक होल्डर्स, यूजर रिक्वायरमेंट्स, एवरीथिंग। एक हाइपोथेटिकल बनाएंगे, फाइनली बाद में बनेगा वंस वी हैव ऑल द रिक्वायरमेंट, देन एलिसिटेशन टेक्निक्स एंड फीचर्स एंड फंक्शन। सो आज के लिए इतना ही है। सो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में दे डालें, और जो भी आपको फीडबैक शेयर करना है आप हमसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लाइक शेयर है फीडबैक शेयर करें ज़रूर।